Hello everyone, good morning. Good morning everyone. Good morning. So we are seeing regular grammars, regular languages. So we are seeing regular languages, okay? So this is the QR code of my compiler design book. This book will be helpful for GATE, BTech and MTech. If you have not bought it, buy it, okay? From the PW store. And this is my Telegram channel link. This is my Telegram channel link, okay? Okay, this is my Telegram channel link. Join the Telegram channel and write your answers in the Telegram channel. Okay, write your answers in the Telegram channel. Okay, so yesterday we were discussing about regular languages. Today also we'll discuss about regular languages. So sigma equal to a comma b, language equal to w such that if a is present in w, it is always followed by 2 B's. Do it and write it in Telegram channel, okay? It is always followed by 2 B's. ये करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देना. मोहित लेक्चर्स होगा 23rd तक और एवरीडे 9 AM को शुरू होगा, 23rd तक चलेगा. ठीक है, वो है प्लान. ठीक है, every a, if a is present in w, it is always followed by 2 B's. ठीक है, इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे डाल देना. ये करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देना.
prepare GATE syllabus. Indiresh, prepare GATE syllabus. Okay. So every A is followed by 2 B's. इसका आंसर करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देना. Use the regular expression DFA and NFA. Use the regular expression DFA and NFA. Every A is followed by 2 B's. Good morning, Shantanu. अर्कित, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत है. ठीक है. तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन देता हूं. नहीं तो लैंग्वेज लिखो पहले. ठीक है. तो लैंग्वेज क्या होगा? 20 के ऊपर कुछ भी कंडीशन नहीं है, तो 20 कितने भी आ सकते हैं, कुछ भी कंडीशन नहीं है. ठीक है. तो बी स्टार इज इन द लैंग्वेज. ठीक है. अगर ये आया तो 2 बीस आना ही है, नहीं तो बी के बाद ए आया तो भी 2 बीस आना ही है. ठीक है. नहीं तो 3 बीस भी आ सकते हैं, नहीं तो ऐसा होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. तो रेगुलर एक्सप्रेशन देता हूं. डीएफ पे देना. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? बी प्लस ए बी स्टार, हर एक ए के बाद 2 बीस होना है. हर एक ए के बाद 2 बीस होना है. ठीक है. अभी डीएफए देना. वेरी गुड. जनार्दन, वेरी गुड. लेकिन आपका डीएफए कंप्लीट नहीं है. लास्ट स्टेट पे ये पे आपने कुछ नहीं बोला है. लास्ट स्टेट पे ये पे आपने कुछ नहीं बोला है. ठीक है. एवरी ए हैज टू बी फॉलोड बाय 2 बीस. लास्ट स्टेट पे आपने ये पे कुछ नहीं बोला है. ठीक है. ठीक है. तो every A has to be followed by 2 base. तो कैसे करेंगे ये? Every A has to be followed by 2 base. और epsilon is in the language.
और बी स्टार इज इन द लैंग्वेज, तो बी स्टार को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और इधर कितने भी बीस आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये आया तो फिर से चेक करना पड़ेगा इफ इट इज फॉलोड बाय टू बीस, ठीक है। अगर ये के बाद ये आया या ये बी के बाद ये आया तो उसको मार देना चाहिए, ठीक है। ये डीएफए है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मिनिमल डीएफए नहीं है, ठीक है। ये दोनों फाइनल स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, ये दोनों फाइनल स्टेट्स को हम मर्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइनल स्टेट बी में फाइनल स्टेट में ही जा रहा है, और ये में स्टेट ए पे जा रहा है, और ये भी बी पे फाइनल स्टेट को ही जा रहा है, और ये पे स्टेट ए को जा रहा है, ठीक है। तो लेटर हम करेंगे लेटर हम करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्टीमेट टीओसी 24 से शुरू होने वाला है, अल्टीमेट टीओसी कोर्स 24 से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज करना ये दोनों फाइनल स्टेट्स को कंबाइन कर देना, ठीक है। एक ही फाइनल स्टेट चाहिए, ये बी, और एक बी आया तो इधर जाना, ये फॉलोड बाय टू बीस, और जितने भी बीस आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं स्टार्टिंग में या ये फॉलोड बाय टू बीस के बाद, ठीक है। लेकिन ये के बाद ये नहीं आना है, ये बी के बाद ये नहीं आना है, अगर आएगा तो उसको मार देना चाहिए, ठीक है। डेड स्टेट, डेड स्टेट ये क्या है, ये फॉलोड बाय टू बीस ये ఫాలోడ్ బై 2 బీస్। సార్ నేను ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ని, మాకు ప్లేస్మెంట్స్ రావట్లేదు సరిగా, టీఓసి కంపైలర్ డిజైన్ సిఎన్ఎన్ మ్యాథ్స్ ఉండిపోయాయి, ఫోకస్గా చేస్తే ఒక మంత్లో అవుతాయా సార్? ఒక మంత్లో అయిపోతాయి భరద్వాజ్, ఒక మంత్లో ఇవన్నీ చేసేయచ్చు, ఓకే। డోంట్ లీవ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, ठीक है। Mahesh, you revise this course also. This course will be crash course will be helpful for revision, okay। Crash course will be helpful for revision, okay। Every A is followed by 2 B's. This is minimal DFA, this is minimal DFA, ठीक है। अगर ये डेड स्टेट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा मिनिमल NFA, डेड स्टेट को हटा दो तो ये मिनिमल NFA बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो L equal to W such that if A is present in W, if A is present in W, it should never be followed by a B. If A is present in W, it should never be followed by a B, ठीक है।
रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना और एनएफए और डीएफए करना, टेलीग्राम चैनल पे कवर डाल देना, ठीक है। भारद्वाज अभी टाइम बचा है, आप सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। A should never be followed by a B. इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देना कम से कम, A should never be followed by B. A should never be followed by B. रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, 20 कितने भी आ सकते हैं, लेकिन एक ये आने के बाद 20 नहीं आना है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, 20 कितने भी आ सकते हैं, लेकिन ये आने के बाद बी नहीं आना है, ठीक है। ये के आगे 20 कितने भी आ सकते हैं, लेकिन ये आने के बाद एक भी नहीं आना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका रेगुलर, इसका डीएफए क्या होगा,
20 कितने भी आ सकते हैं, लेकिन ये आने के बाद सिर्फ ये सी आना है, ये के बाद बी आएगा तो हम मार देंगे। ठीक है, ये के बाद बी आएगा तो हम वो स्ट्रिंग्स को मार देंगे। ठीक है, डेड स्टेट है ये है मिनिमल डीएफए, ये है मिनिमल डीएफए। और मिनिमल एनएफए कैसे आएगा, और मिनिमल एनएफए कैसे आएगा, मिनिमल एनएफए कैसे आएगा? वेरी गुड जनार्दन, जनार्दन ने आंसर दिया है। ठीक है, और मिनिमल एनएफए कैसे आएगा? ये डेड स्टेट को हटा देना, तब मिनिमल एनएफए बन जाएगा। डेड स्टेट को हटाने से मिनिमल एनएफए बन जाएगा। डेड स्टेट को हटाने से मिनिमल एनएफए बन जाएगा। ठीक है, equal to W such that if A is present in W, it should never be followed by BB. It should never be followed by BB. If A is present in W, it should never be followed by BB. If A is present in W, it should never be followed by BB. ठीक है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्टली डीएफए एनएफए दे दो। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्टली डीएफए एनएफए लिख लो। डायरेक्टली डीएफए एनएफए लिख लो। निशु डीएफए बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। डीएफए बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना।
जनार्दन, DFA बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। तो लैंग्वेज क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। ये शुड नॉट बी फॉलोड बाय 2Bs। जनार्दन, आपका ये 2Bs से फॉलो हो रहा है ना? अच्छा, आपने ऐसा किया है। लैंग्वेज में बी स्टार है जनार्दन, बी स्टार को भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है? तो बी, बी बी सो ऑन, बी स्टार भी लैंग्वेज में है। बी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी स्टार लैंग्वेज में है, ठीक है? अगर ये आएगा तो उसके बाद ये आ सकता है, उसके बाद एक बी आ सकता है, लेकिन 2 Bs नहीं आ सकता है, ठीक है? नहीं तो बी ए आ सकता है, नहीं तो बी ए आ सकता है, नहीं तो बी ए बी आ सकता है, ठीक है? लेकिन ये के बाद 2 Bs नहीं आ सकता है, ठीक है? तो लैंग्वेज में एप्सिलॉन है, बी है, सो ऑन, बी बी है, सो ऑन, तो बी स्टार लैंग्वेज में है, ठीक है? तो पहले स्टेट में हम एप्सिलॉन का एक्सेप्ट करते हैं, तो इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाएंगे, ठीक है? और बी स्टार को एक्सेप्ट करेंगे, बी स्टार को एक्सेप्ट करेंगे, बी स्टार को एक्सेप्ट करेंगे, और ये किए आने के बाद ये किए आ सकता है, ये किए आ सकता है, और ये के बाद कितने भी ये आ सकता है, और ये के बाद ये एक बी आ सकता है, हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये के बाद 2 Bs आया तो हम मार देंगे, ये के बाद 2 Bs आएगा तो हम मार देंगे, ठीक है? अगर इधर ये आया तो फिर से हम चेक करेंगे कि वो 2 B से फॉलो कर रहा है क्या, ठीक है? ठीक है, तो ये है मिनिमल DFA। रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? और मिनिमल NFA क्या होगा? मिनिमल NFA क्या होगा? डेड स्टेट को हटा देना, ठीक है? तब मिनिमल NFA होगा, ठीक है? अभी इसका करना, एक बार देख लेना सॉल्यूशन को, एक बार सॉल्यूशन को देख लेना। ठीक है, इसको देखना, a पावर n b पावर m such that n comma m greater than or equal to 1, a पावर n b पावर m such that n comma m greater than or equal to 1, ठीक है? इसका DFA NFA लिखना, इसका DFA NFA लिखना, इसका DFA NFA लिखना,
वेरी गुड। रेगुलर एक्सप्रेशन आपने सही दिया है। निशु एंड स्टडी फॉर एआई। DFA NFA लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। DFA NFA लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। हम्म। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? A पावर n B पावर n अर्थ आपने A स्टार B स्टार दिया है क्या? फाइनल स्टेट्स नहीं डाला है अर्थ। अर्थ फाइनल स्टेट्स नहीं डाला है आपने। फाइनल स्टेट्स नहीं डाला है आपने अर्थ। ठीक है, तो इसका क्या होगा? A प्लस B प्लस होगा। ठीक है, A प्लस B प्लस होगा। और इसे कैसे लिख सकते हैं? A स्टार B स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमल स्ट्रिंग क्या है? ये भी है। मिनिमल स्ट्रिंग ये भी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो NFA क्या होगा? ये फॉलोड बाय ये स्टार और B फॉलोड बाय B स्टार। ये फॉलोड बाय ये स्टार, B फॉलोड बाय B स्टार। ठीक है, ये होगा मिनिमल NFA। ये होगा मिनिमल NFA। ठीक है, और मिनिमल DFA क्या होगा? इधर जो मिसिंग एडजस है उसको डाल देना। ठीक है, इधर जो मिसिंग एडजस है उसको डाल देना। डेड स्टेट पे A और B लगा देना जनार्दन। आपका आंसर सही है, लेकिन डेड स्टेट पे A और B डाल देना। ठीक है, लूप A B का लूप डाल देना डेड स्टेट पे। और इनिशियली B आएगा तो उसको मार देना चाहिए, क्योंकि इट शुड स्टार्ट विथ A। और B के बाद A आएगा तो उसको भी मार देना चाहिए। B के बाद A आएगा तो उसको भी मार देना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड स्टडी फॉर AI। आपका नाम क्या है? ये स्टडी फॉर AI डाला है आपने। आपका नाम क्या है? ठीक है। A power n B power m such that n comma m greater than or equal to 0. A power n B power m such that n comma m greater than 0. हाँ विशाल, इसका करना विशाल। A power n B power m such that n comma m greater than or equal to 0. n comma m greater than or equal to 0.
a power n b power m such that n comma m greater than or equal to 0। ठीक है, टोटल कितने लेक्चर्स लेंगे कंप्लीट होने में? 23rd तक है आयुष, 23rd तक है। ट्वेंटी थर्ड तक है, ठीक है। वेरी गुड अर्थ। a power n b power m such that n comma m greater than or equal to 0। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? a स्टार b स्टार होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, a स्टार b स्टार होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो DFA क्या होगा? a स्टार फॉलोड बाय b स्टार, ठीक है। ये है मिनिमल NFA, राइट। और मिनिमल DFA क्या होगा? B के बाद ये नहीं आना है तो डेड स्टेट डाल देंगे, B के बाद ये नहीं आना है तो डेड स्टेट डालेंगे। ये हो जाएगा मिनिमल DFA। मिनिमल DFA में तीन स्टेट्स है और मिनिमल NFA में 2 स्टेट्स। मिनिमल NFA में 2 स्टेट्स। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड विशाल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसका करना। a स्टार प्लस b स्टार, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन देख रहा हूँ। a स्टार प्लस b स्टार, इसका DFA और NFA बनाना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेके बनाना DFA और NFA, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसका टाइम लेके DFA NFA बनाना। टेलीग्राम चैनल पे डाल देना, टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। ये आंसर टेलीग्राम चैनल पे डाल देना, टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। वेरी गुड विशाल, सब लोग लिखना आंसर टेलीग्राम चैनल पे। विशाल वेरी गुड।
सब लोग टेलीग्राम चैनल पे आंसर डाल देना। पेन और पेपर लेके करना, तभी प्रैक्टिस होगा। पेपर में लिखना और फोटो लेके टेलीग्राम चैनल पे डालना। वेरी गुड अर्थ, वेरी गुड। टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड देता हूं, एक बार देख लेना। ये है टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, ठीक है। कोड विथ फन, ये स्कैन करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना, ठीक है। और ए स्टार प्लस बी स्टार, ठीक है। ए स्टार प्लस बी स्टार, तो एप्सिलॉन होगा लैंग्वेज में। अगर ये आया तो उसके बाद सिर्फ येस आना है। अगर बी आएगा तो उसके बाद सिर्फ बीस आना है। अगर ये के बाद बी आया या बी के बाद ये आया तो हम उसको मार देंगे। अगर ए के बाद बी आया या बी के बाद ये आया तो हम उसको मार देंगे, ठीक है। ये होगा मिनिमल DFA। वेरी गुड जनार्दन, वेरी गुड जनार्दन। ये होगा मिनिमल DFA, ठीक है। और मिनिमल NFA क्या होगा? डेड स्टेट को हटा देना, वो बन जाएगा मिनिमल NFA। डेड स्टेट को हटा दिया तो वो मिनिमल NFA बन जाएगा, ठीक है। अभी इसका करना, a power n b power m such that n is greater than or equal to 0, m is greater than or equal to 1. n is greater than or equal to 0, m is greater than or equal to 1. इसका DFA NFA डाल देना, इसका NFA DFA दे देना। a power n b power m such that n is greater than or equal to 0, m is greater than or equal to 1. n is greater than or equal to 0, m is greater than or equal to 1. n is greater than or equal to 0, m is greater than or equal to 1.
वेरी गुड अर्थ। तो इसको कैसे लिखते हैं? ए स्टार फॉलोड बाई बी स्टार। मिनिमल स्ट्रिंग इज बी आने के बाद ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो जितने भी एस आ सकते हैं आने दो, और उसके बाद जब बी आएगा तो एक्सेप्ट करो, और उसके बाद सिर्फ 20 आना है, ठीक है। ये है मिनिमल एनएफए, ये है मिनिमल एनएफए, ठीक है। और मिनिमल डीएफए क्या होगा? डेड स्टेट लगाना। एक बी आने के बाद ये नहीं आना है, एक बी आने के बाद ये नहीं आना है, ये बन जाएगा मिनिमल डीएफए, ये बन जाएगा मिनिमल डीएफए, ठीक है। ये बन जाएगा मिनिमल डीएफए। और इसका आंसर करना a power n b power m such that n is greater than or equal to 1, m is greater than or equal to 0, n is greater than or equal to 1, m is greater than or equal to 0। इसका आंसर करना। वेरी गुड अर्थ, वेरी गुड विशाल। वेरी गुड। a power n b power m such that n is greater than or equal to 1, m is greater than or equal to 0, ठीक है। तो this is going to be a plus b star, so this is going to be a star b star, a star b star, right? Now what is minimal NFA? Minimal NFA for a star b star. So you are going to get a star
A star, single A has to be accepted. After that, any number of A's you have to accept. Okay. And then B star, B star. This is minimal NFA. What will be minimal DFA? Initially, B should not come. String should start with A, right? And after a B, A should not come. Now add the dead state. Okay? Now this is minimal DFA. This is minimal DFA. Okay? Now answer this question. A power n, B power m, C power l such that n comma m comma l greater than or equal to 1. N comma m comma l greater than or equal to 1. ठीक है? N comma m comma l greater than or equal to 1. A power n, B power m, C power l such that n comma m comma l greater than or equal to 1. टेलीग्राम में आंसर करना. A power n, B power m, C power l such that n comma m comma l greater than or equal to 1. N comma m comma l greater than or equal to 1. Very good, Arth. Very good, Arth. Very good, Vishal. Very good, Janardhan. Okay. So what is the answer for this?
So this is a plus b plus c plus, right? So the regular expression is a plus b plus c plus. How can you write the regular expression in terms of ABC? How can you write the regular expression? A star, B star, C star, A star, B star, C star, right? Now what about the minimal NFA? Minimal NFA, A followed by A star. Minimal string is ABC. Only after seeing ABC you have to accept. Otherwise don't accept, okay? A star, B star, C star, A star, B star, C star. So accept it. Only after seeing ABC minimum string you have to accept it, right? So this is minimal NFA. What is minimal DFA? You have to add dead state. Initially you should get A only, you should not get BC. And after seeing A you should see B only, you should not see a C. After seeing a B you should not see a you should see a C. And after seeing a C you should not see a B, you should not see a B. So this is the dead state. This is the dead state. A comma B comma C is the dead state. Okay, answer this question. A power n, B power m, C power l such that n comma m comma l greater than or equal to 0. N comma m comma l greater than or equal to 0. N comma m comma l greater than or equal to 0. A power n, B power m, C power l such that n comma m comma l greater than or equal to 0. N comma m comma l .
Very good, Vishal. Very good, Vishal. Others also try answering this. Others also try answering this. What, Janardhan? Janardhan, what is your answer? Okay, Janardhan, there is a slight mistake. I will answer it. Check your answers, okay? A power n, b power n, c power n such that n comma m comma l greater than or equal to 0. So this is a star, b star, c star, a star, b star, c star, right? So what is minimal NFA? So what is minimal NFA? You are going to get a star, then b star, then c star. This is the minimal NFA. After A, C may come directly, right? This is the minimal NFA. This is the minimal NFA. Now what is the minimal DFA? You have to add the dead state. After a B, A should not come. After a C, A and B should not come. It is a dead state. A comma B comma C is a dead state. A comma B comma C is a dead state. Okay, so it's been 1 hour. It's been 1 hour. Let's take a short break for 3 minutes. After that, we'll continue. Okay, let's take a short break for 3 minutes. After the break, we'll continue. Let's take a small break for 3 minutes. After the break, we'll continue.
Okay. So answer the next question. Sigma equal to A comma B, language equal to A to B W A cube B W A cube. Language equal to A cube B W A cube. Okay. A cube B W A cube such that W belong to A plus B star. W belong to A plus B star. W belong to A plus B star. Draw the NFA and DFA for this. Draw the NFA and DFA for this. Draw the NFA and DFA for this. Draw the NFA and DFA for this.
Janardhan, Vishal, what are the answers? What are the answers? A cube BW, A cube. W is any string. A comma B star. Very good, Vishal. Your NFA is right. What about the DFA? Okay, try it. Your NFA is right. You the DFA. No one else is able to answer this.
Okay, let me answer it. Very good, Vishal, you are right. Little bit, yeah, you are right, I guess. I think little bit changes are required. Other than that, you are right. Janardhan, very good, right? So writing DNFA is very easy for this. DFA may be little bit tricky. Okay, writing NFA is very easy for this. DFA is little bit tricky. So what will be the NFA? A cube, A, A, A cube followed by W, which means anything can come in between, and then A, accept it. Accept it. Right? Now what will be the DFA for this? So A, A cube, A, A, A followed by a B, followed by a B, then A cube, A, 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 right? Accept it, right? Accept it. Now this is nothing but set of all strings starting with A cube B and ending with A cube, ending with A cube and starting with A cube B, right? Now if this string is going to start with a B or a AB or a AAB or a AAAA, right? You are going to kill it. Dead state. You are going to kill it, right? Right. Now it should end with AAA. It should end with AAA. Any number of B's may come here, but it should end with AAA, right? After AA, if a B comes, wait for AAA. After AAA, if a B comes, wait for AAA. After AAA, if a B comes, wait for AAA, right? So this is the minimal DFA, right? And this is the minimal NFA, minimal NFA, right? Answer this question. L equal to W such that second symbol from LHS is A. Second symbol from LHS is A. Second symbol from LHS is A.
Second symbol from LHS is A. Write it in the Telegram channel. Write it in the Telegram channel. First symbol can be anything. Second symbol has to be A. Vishal, you have unnecessarily added extra states. Extra states are not required, right? Third symbol is not required, Himanshu. Third symbol is not required. You can stop at second symbol, right? So, first symbol can be anything. What is regular expression? First symbol can be anything. Second symbol has to be A. And after that, you can get anything, right? Now, what is the NFA for this? What is the minimal NFA for this? What is the minimal NFA for this? First symbol can be anything. First symbol can be anything. Second symbol has to be A. After that, you can get anything. First symbol can be A or B. Second symbol has to be A. After that, you can get anything, right? Now, what is minimal DFA? At the dead state, right? Second symbol has to be A. If second symbol is B, you kill it. If second symbol is B, you kill it. If second symbol is B, you kill it. Okay? Okay? So, let's now convert finite automata to regular expression, right? There are three methods. Use your intuition, which means practice. Use your intuition and convert directly finite automata to regular expression, right? How do you do this? From finite automata, find out the language. From the language, you write the regular expression, right? Otherwise, the second method is state elimination method. State elimination method. This we will discuss. State elimination method is fast. State elimination method is fast. And third one is Arden's lemma. Arden's lemma is slow. But still we will learn Arden's lemma because there may be some questions which you will be able to answer only using Arden's lemma. Okay. Let's now see the state elimination method. Let's now see the state elimination method, right? So one thing is there should not be any incoming edges to the initial state. If you have an initial state, there should not be any incoming edges, right? This is an incoming edge. And also if you have a loop is both outgoing and incoming. There should not be any incoming edges. There is incoming edge here, there is incoming edge here, right? Now what do you do in that case? You add a new initial state. You add a new initial state. This is one rule, right? And then from the final state, there should not be any outgoing edges. From the final state, there should not be any outgoing edges. Here there is a outgoing edge from the final state. What do you do in this case? We will make the final state as
non-final state, and you will add a new final state on epsilon, right? Now after doing this, you eliminate all the states except initial state and final state. Yeah, Himanshu, you have to practice. If you practice, you will be able to. अगर practice करेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये दोनों रूल्स को याद रखना। क्या है? इनिशियल स्टेट में इनकमिंग एज नहीं आना है, अगर आया तो नया इनिशियल स्टेट डाल दो। फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज नहीं होना है, अगर आया तो नया फाइनल स्टेट डाल दो, ठीक है? और उसके बाद स्टेट्स को एलिमिनेट करो एक के बाद एक, स्टेट्स को एलिमिनेट करो एक के बाद एक, ठीक है? ठीक है, अभी इसको देखना, ये एग्जांपल को। ये 0 B 1, do state elimination method on this, okay? Do state elimination method on this and find out what you are getting. इनिशियल स्टेट में इनकमिंग एज है, फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एज है, ठीक है? तो नया इनिशियल स्टेट डालना पड़ेगा, नया फाइनल स्टेट डालना पड़ेगा, और उसके बाद सारा स्टेट्स को एलिमिनेट करेंगे एक के बाद एक, सारा स्टेट्स को एलिमिनेट करेंगे एक के बाद एक एक्सेप्ट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, तो आपको आंसर मिल जाएगी, ठीक है? ट्राई करना इसका, apply state elimination method and get the answer. Apply state elimination method and get the answer. State elimination method apply करके आंसर निकालना। First eliminate A, then eliminate B and give me the answer, okay? फर्स्ट ए को एलिमिनेट करना, उसके बाद बी को भी, ये बी को एलिमिनेट करना फर्स्ट, और उसके बाद बी ए को एलिमिनेट करना, और दोनों आंसर्स देना। ए बी को एलिमिनेट करना, बी ए को एलिमिनेट करना, और दोनों आंसर्स देना।
तो इनिशियल स्टेट में इनकमिंग एज है, फाइनल स्टेट में आउटगोइंग एज है। तो हमको नया इनिशियल स्टेट बनाना पड़ेगा और ये पे डालना पड़ेगा और नया फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा और एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है। तो पहले ए को एलिमिनेट करेंगे। अगर ए को एलिमिनेट करेंगे तो हम क्या क्या पाथ्स मिस हो सकते हैं। अगर ए को एलिमिनेट करेंगे तो हम क्या क्या पाथ्स मिस हो सकते हैं। तो ए को एलिमिनेट करेंगे तो हम हमको एक पाथ आएगा एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन फॉलोड बाय 0 टू बी, विच मीन्स 0 टू बी। ठीक है, और एक पाथ आएगा 1 फॉलोड बाय 0, लूप आएगा इधर, है ना। 1 फॉलोड बाय 0, 1 फॉलोड बाय 0, एप्सिलॉन फाइनल स्टेट। ठीक है, अगर मैं बी को एलिमिनेट करूंगा तो ये 0 फॉलोड बाय 1 0 स्टार बन जाएगा, 0 फॉलोड बाय 1 0 स्टार बन जाएगा। 0 फॉलोड बाय 1 0 स्टार। अगर इनिशियली बी को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो इनिशियली बी को एलिमिनेट करेंगे तो क्या पाथ्स मिस होगा, क्या पाथ्स मिस होगा। तो QS एप्सिलॉन ये बी को एलिमिनेट करेंगे तो 0 पे फाइनल स्टेट पे जाएगा, है ना। ये ऑन 0 पे फाइनल स्टेट पे जाएगा, ये ऑन 0 पे फाइनल स्टेट पे जाएगा और एक लूप आएगा 0 1, ये पे लूप आएगा 0 1, ए पे लूप आएगा 0 1, ए पे लूप आएगा 0 1। अगर ए को एलिमिनेट करेंगे तो 0 1 स्टार फॉलोड बाय 0 आएगा, 0 1 स्टार फॉलोड बाय 0 आएगा। और ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन सही है और दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल है। ठीक है, आप जिस ऑर्डर में स्टेट्स को एलिमिनेट करते हैं उसके ऑर्डर में रेगुलर एक्सप्रेशन बदलेगा, लेकिन जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा। जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, वो इक्विवेलेंट होगा। जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अभी इसका करना, ये 0 1 बी 0, ये क्या फाइनाइट ऑटोमेटा है 1, ये क्या फाइनाइट ऑटोमेटा है। कोई बता सकता है कि लैंग्वेज क्या है। कोई ये बता सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है। कोई ये बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज क्या है। वेरी गुड, even number of ones, even number of ones। ये है even number of ones।
Very good, Vishal. Very good, Vishal. Everyone try it. Everyone try this. So initial state has incoming edge and final state has outgoing edge. So you have to add extra initial state and extra final state. Then you can eliminate states in any order, right? Right. So initial state has incoming edge and final state has outgoing edge, right? So what I will do is I will add a new initial state and final state and I will tilt the diagram like this. मैं डायग्राम को टिल्ट करूंगा, ठीक है? तो डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसा बन जाएगा 1 B 0 0 1 नया इनिशियल स्टेट लगाना चाहिए और नया फाइनल स्टेट लगाना चाहिए। अभी ये फाइनल स्टेट नहीं है, ये फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है? तो पहले आप कुछ भी एलिमिनेट कर सकते हो। मैं बी को एलिमिनेट करूंगा। अगर बी को एलिमिनेट करूंगा तो एक लूप बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा 1 0 स्टार 1 0 स्टार 1 1 0 स्टार 1। अभी इसके ऊपर ये के ऊपर दो लूप्स है 0 0 स्टार 1। तो आप ये जीरो को इधर कैंसिल करके इधर लिख सकते हो, ठीक है? अभी ये को एलिमिनेट करूंगा तो इसके ऊपर स्टार आएगा 1 0 स्टार 1 प्लस 0 होल स्टार आएगा। दिस इज इवन नंबर ऑफ एस, इवन नंबर ऑफ वंस। दिस इज इवन नंबर ऑफ वंस, ठीक है? दिस इज इवन नंबर ऑफ वंस। अभी इसका करना आप ये 0 1 B 0 1 C 0 1। स्टेट एलिमिनेशन मेथड में इसका आंसर निकालना। पहले ये बताओ कि ये लैंग्वेज क्या है। पहले ये बताना कि ये लैंग्वेज क्या है। पहले ये बताना कि ये लैंग्वेज क्या है। पहले ये बताना कि ये लैंग्वेज क्या है। ये ऑड नंबर ऑफ वंस है क्या? नंबर ऑफ वंस आर मल्टीपल ऑफ 3। वेरी गुड। Number of ones are multiple of 3. Number of ones are
multiple of 3. ठीक है, स्टेट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना। स्टेट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना।
Very good. So initial state has incoming edge and final state has outgoing edge. So what I will do is I will just twist the diagram like this so that it will be easy for me to eliminate the states. Okay? So A is not a final state now. A is not a final state now. A on 1 will go to B, B on zeros, and B on 1 will go to C, C on zeros, A on 1, you add a new initial state and you add a new final state. Okay, so I will eliminate B and C together. Now if I eliminate B and C, what do I get? 1 0 star 1 0 star 1. So I will get a loop on this. I will get a loop on this. On this loop, what I get? 1 0 star 1 0 star 1. Right? So I can eliminate these two. So I will get a loop 1 0 star 1 0 star 1. Okay. On A, there is already 0 on loop. Now we got one more loop. So I will delete this and I will write plus 0. Right? Now entire thing is on a loop. Entire thing on is there on a loop. So I will put a star. This is the answer. I'll put a star and this is the answer. 0 plus 1 0 star 1 0 star 1 whole star. Okay, fine. It has been 1 hour. Let's take a small break for 3 minutes. After that, we'll continue with Arden's lemma. Let's take a small break for 3 minutes. Thank you, Lavi Tripathi. Let's take a small break for 3 minutes and then we'll continue. Okay.
Okay, now let's see Arden's lemma. Arden's lemma has two equations. You have to by heart those two equations. Okay. Arden's lemma has two equations. You have to by heart those two equations. Okay. Arden's lemma. Two equations are like this. S equal to R plus ST. If you have S equal to R plus ST, then S will become RT star. Okay. And if S equal to R plus TS, S equal to R plus TS, then S equal to T star S, T star R, then S equal to T star R, RT star or T star R, RT star R, T star R. Okay, you have to by heart these two equations, right? Now let's take a small example and apply Arden's lemma on that. If you use state elimination method, you will directly get the answer, but I want you to practice Arden's lemma. Okay, so A on 0 goes to B on 1, B has a loop on 1, and B is the final state, right? And then on 1 it goes to C on 0, right? If you use state elimination method, you will directly get the answer. What is the answer? 0 plus 1 0 followed by 1 star. 0 plus 1 0 followed by 1 star. That's it. But I want you to practice Arden's lemma. Okay. So frame the equations. How are you going to frame the equations is for every income you have to see all the incoming edges. Okay. You have to see all the incoming edges and write the equations. Okay. So initially A has no incoming edge. For every initial state, you have to add epsilon. So A equal to epsilon, right? Now for B, see all the incoming edges. For B, there is an incoming edge from A, which means A on 0. There is an incoming edge from C, which means C on 0. There is an incoming edge on 1. Loop is both incoming and outgoing, right? So there is an incoming edge on 1. So B on 1, right? Now coming to C, there is only one incoming edge. There is only one incoming edge. So we are going to write A on 1. We are going to write A on 1. Okay. Now you have to solve for the value of B. Whatever is the final state, you have to solve for the value of the final state. You have to solve for the value of the final state. You have to solve for the value of the final state. Okay. Okay. So A equal to epsilon. If I substitute A value here, then I will get C equal to 1. Now A equal to epsilon and C equal to 1. So in place of B, I will put A equal to epsilon, which means I get 0, and C equal to 1, which means I get 1 0, and then I get B1, and then I get B1, right? Now it is in the form of S equal to R plus ST. S equal to R plus ST. So what is the solution? S equal to RT star. S equal to RT star. Now what is R? R is 0 plus 1 0 followed by T star is 1 star.
T star is 1 star. That is how you apply Arden's lemma. That is how you apply Arden's lemma, right? Sometimes in the exam, they will give you equations. Very good, Vishal. Very good, Vishal. So sometimes, now you may ask, why can't we use state elimination method? Why are we using Arden's lemma? State elimination method is really fast. You can use state elimination method, but I am using Arden's lemma so that you will practice Arden's lemma, right? In exam, they will give you some questions where Arden's lemma is definitely required. In exam, they will give you some questions where Arden's lemma is definitely required. Where Arden's lemma is definitely required. Okay. Okay. For example, they may give equations like this: a equal to 1 0. They will not give you finite automata, so you cannot apply state elimination method. 0 1 a plus b, right? B equal to 0 0 plus cb, c equal to 1 1 plus 0c plus 0c, right? A is the final state. You have to solve for the value of A. A is final state. You have to solve for the value of A. Do this using Arden's lemma. You have to solve for the value of A. You have to solve for the value of A. Try this. Try this. Write the answer on Telegram channel. Try this and write the answer on Telegram channel. Write the equations and solve for A. Write the equations and solve for A.
Vishal has given one answer. Everyone solve it, then I will solve. Only Vishal has answered. Anyone else has got the answer? Let me solve it, okay? So you can solve it like this. You can solve it like this. First you eliminate C. So you can solve it like S equal to R plus TS. S equal to R plus TS. Now you are going to get S equal to T star R, which means C equal to 0 star 1 1. T equal to 0 star 1 1. Now you substitute the value of C in B. You substitute the value of C in B, right? Now what do you get? B equal to 0 0 plus 0 star 1 1 B, right? Now what is this? This is S equal to R plus TS. S equal to R plus TS. So what do you get? S equal to T star R. S equal to T star R, which means B equal to
T star. T star means 0 star 1 1 whole star. 0 star 1 1 whole star followed by 0 0 T star R. Right? Now you substitute the value of B, this value of B here in A. So what do you get? A equal to 1 0 plus A equal to 1 0 plus A equal to 1 0 plus 1 0 plus B. What is B? 0 star 1 1 whole star 0 0 plus 0 1 A plus 0 1 A. Now what is this? This is S equal to R plus S equal to R plus TS. S equal to R plus TS. So what do you get? S equal to T star R. S equal to T star R, which means A equal to T star is 0 1. 0 1 star followed by R. R means 1 0 plus 0 star 1 1 star 0 0. Right? A equal to 1 0 star plus 1 0 0 star 1 1 0 0. Right? So this is the final answer for A. Now I'll give you a question, very big question. Try to answer this. A, B, 0, 1, C, 0, 1, 1, C, 0, D, 1, 1, 0, E, 0, 0. Right? So the question is, if D is final state, then language is LD. If E is final state, then language equal to LE. Now options are LD equal to LE, B, LD is a subset of LE, C, LE is a subset of LD, D, LD not equal to LE. LD not equal to LE. LD not equal to LE. Right? So answer this question. अलंकार पेड बैच में जनरली ज़्यादा पढ़ाते हैं यूट्यूब से कंपेयर करके। पेड बैच में जनरली ज़्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है।
What is the answer? If you try to find the languages, it will take a lot of time. You have to answer within 2 minutes. No one is able to find the answer. No one is able to find the answer. Some people are saying A, some people are saying B. Right. So people who are saying A, can you write in the Telegram channel how you got A? People who are saying A, can you write on the Telegram channel how you got A? विशाल is saying याद है ये question. ठीक है. So write the equations for D and DE. Then you will understand that both D and DE are same, right? So write the equations for D and DE.
If you write the equation for D, see all the incoming edges. So C on 0 is an incoming edge, and D on 1 is an incoming edge, and E on 0 is an incoming edge. Write the equations for E. For E, C on 0, E on 0, and D on 1. If you see this, both the equations are same. So if you solve them for the regular expressions, you are going to get the same regular expressions. Therefore, LD equal to LE. Therefore, LD equal to LE. LD equal to LE. Right? Right? So now let us see. Now let us see regular grammars. Now let us see regular grammars. Let us see regular grammars. Okay. Regular grammars are of two types. Regular grammars are of two types. Right linear grammar, left linear grammar. Right linear grammar, left linear grammar. A right linear grammar will be like this. A derives alpha b or beta. A derives alpha b or beta, where a comma b belongs to vertices and alpha comma beta belong to T star terminals. Alpha comma beta belong to T star terminals, right? And left linear grammar will be like this. A derives b alpha or beta. A comma b belongs to vertices. Alpha comma beta belongs to terminals. Alpha comma beta belongs to terminals. Okay. So for every regular language, there will be a regular grammar. There will be right linear grammar and there will be left linear grammar. For every regular grammar, there will be right linear grammar and there will be left linear grammar. Okay. So now let's write the grammars. Okay. Let's write the grammars. Language equal to 5. What will be the grammar for that? You should not generate any terminals, right? So there will be no terminals. I can write S derives A, only vertices. It will not generate anything, right? So L equal to 5. Now let us say L equal to epsilon. L equal to epsilon. What is the grammar for this? S derives epsilon. Now let us say L equal to A. Language equal to A. What is the grammar for this? S derives A. Now let us say L equal to A comma B. What is the grammar for this? S derives A, S derives B. Now since the left hand sides are same, I can combine them. S derives A or B. S derives A or B. Right? Now you write the grammar for L equal to A star. Write the grammar for L equal to A star. Left linear and right linear grammar for L equal to A star. You write the grammar for L equal to A star. Left linear grammar and right linear grammar.
Very good, Vishal. Very good. So you can write like this. S derives AS or epsilon, or S derives SA or epsilon. This is right linear grammar, this is left linear grammar, right? Now if you observe it, it will derive any number of A's. It will derive epsilon, it will derive A, single A, or it will derive two A's, any number of A's it will derive, right? Similarly, this will also derive any number of A's, AS or epsilon, AS or epsilon, right? Now answer for this. Language equal to A plus. Give the grammars. Give the left linear grammar and right linear grammar. Language equal to A plus. Give the left linear grammar and right linear grammar. Language equal to A plus. Give the left linear grammar and right linear grammar. Very good. So A plus is, you can write like this. You have to generate minimum single A, right? Epsilon is not there. So you can write it as S derives AS or A, or you can write this as S derives SA or A. Anyway, both of them will generate single A and then any number of A's, right? Any number of A's. Now I'll give you a grammar which is not a regular grammar, but still a popular grammar. L equal to A star. This is not a regular grammar. S derives SS or A or epsilon. SS or A or epsilon, right? This grammar is ambiguous because we get more than one parse tree for a given string epsilon, right? So S derives SS, epsilon, epsilon. So we get more than one parse tree for epsilon.
So this grammar is ambiguous. So this grammar is ambiguous, right? Now similarly for L equal to A plus, I will give you one more grammar which is not regular. It is context-free grammar. Okay? S derives SS or A. This will generate any number of A's with minimum one A, right? So this grammar is also ambiguous. This is context-free grammar. This is not regular grammar, and this grammar is ambiguous. Why? Because if I have to generate three A's, I can get two parse trees. If I have to generate three A's, I will get two parse trees. Therefore, this is ambiguous. And this is not regular because variables are side by side. Variables are side by side, right? Now, if you have any x, if you have any string, and if you want to, or if you have any regular expression, and if you want to apply, if you have any regular expression, and if you want to apply a star to that, right? For example, I want x star. X can be any string. Then you are going to write s derives xs or epsilon, or you are going to write s derives sx or epsilon. This will give you x star, right? Now for example, if you want to do ab star, if you want to do ab star, if you want to do ab star, then in place of x you have to put ab. What happens? S derives abs or epsilon, or S derives SAB or epsilon. SAB or epsilon, right? Similarly, if you have 1101 star, 1101 star, so to put 1101, you can put like this: 1101 S or epsilon, or S derives S followed by 1101 or epsilon, 1101 or epsilon, right? Now give the grammar for this x star y. Give the grammar for this. Give right linear grammar for this. S derives x star or y.
So x star or y. Very good. X star y. So you are going to get s derives xs or y. So s will directly derive y, or s will derive xs and then y, or s will derive xs and then y, which means x star followed by a y. X star followed by a y, right? X star followed by a y. This is right linear grammar, okay? Left linear grammar we'll see later. Now tell me, what is the language generated by s derives sx or y? What is the language generated by s derives sx or y? S derives sx or y. What is the language generated by s derives sx or y? S derives sx or y, right? So it is going to derive y followed by x star. S will derive y, or S will derive sx and then y, or S will derive sx, sx and then y. Therefore, y followed by x star is the answer. Y followed by x star is the answer. Right? Right? Now what is the language generated by this? S derives 01s or 110. S derives 01s or 110. S derives 01s or 110.
S derives 0 1, S or 1 1 0, right? S will derive 1 1 0, or S will derive 0 1 S 1 1 0, or S will derive 0 1 S, S will derive 0 1 S 1 1 0, right? Therefore, this is 0 1 star followed by 1 1 0, 0 1 star followed by 1 1 0. This is the grammar, right? Now, when you have two languages L1 plus L2, two languages, then what you are going to write is S derives A or B. Now, A should derive L1, B should derive L2, right? If you have two languages, L1 concatenated with L2, now S will derive A, B. Now A should derive L1 and B should derive L2. B should derive L2, right? Now answer this question. A star plus B star. A star plus B star. Give right linear grammar and left linear grammar for this. Give right linear grammar and left linear grammar for this. A star plus B star. Give right linear grammar and left linear grammar for this. Give right linear and left linear grammar for this. Okay. So this is union of two languages. Whenever union of two languages are given, you can write like this. S derives S1 or S2, right? S1 should derive A star, S2 should derive B star, right? So S1 derives A S1 or epsilon, S2 derives B S2 or epsilon. So this is right linear grammar. This is right linear grammar. Okay. Now you can also give left linear grammar. S derives S1 or S2. S1 derives S1A or epsilon. S2 derives S2A or S2B or epsilon. This is left linear grammar. Okay.
Okay, fine. We will end the class here. We'll continue tomorrow. Jai Hind. Jai Hind.